Good afternoon to all of you. So today we are going to discuss about question answer of photosynthesis lesson. I think photosynthesis not completed or not covered uh, like complete lesson. 1 minute. So, but we discussed the concept as well as question, and in next 2 days we will cover the lesson also uh, in a regular class. Okay. So, I assume in your school photosynthesis already over, so you can give me the response when I launch the poll. And in most question, for the most question, 1 minute is the time for solving the question. Okay. So remember the concept, and we discuss the question in detail also. Okay. So before going to enter the class, I'm launch the technical poll. Is my voice clear to all of you? And the screen is visible to all of you? Please tell me. People who join from the YouTube, they can answer in the YouTube live chat box. People who join from the Zoom, they can answer in poll as well as they can answer in chat box also. Is my voice clear and my screen is visible to all of you? Please answer fast. Okay. I think my voice is clear and screen is visible. So we will start the today's session. Okay, myself, Yudhishthir Suryanshi. Due to some health issue, ma'am will not join for 1 to 3 days. Okay, so uh, her question on your screen is: which technique have helped in investigation of Kelvin cycle? Okay, and this question asked in 1991 in all India level medical entrance examination. Option A is X-ray crystallography. Option B is X-ray technique. Option C is a radioactive isotope technique. And option D is a intermittent light. I'm launching poll for it, guys. Please answer fast. If you know about the question, you can answer. You have a 1 minute to solve this question. Please answer. People who join from the YouTube, they can answer in the chat box of YouTube. Okay. You have a 30 second to solve this question. Please answer fast. Okay. So I'm in this poll, and this is your result here. Maximum people choose an option C. Obviously, option C is the correct. Okay. So first, we go with the one by one technique. Okay. I will discuss all the things in detail. Okay. Because what is the correct method to solve MCQ is uh, why three options are the wrong. This thing we want to know, because if any question which asks why the other method, okay, then we already know about why three options are wrong, why one option is correct, right, like that. So it create a less confusion during question solving. Okay, so that's why we go with the one by one, and then we discuss about the right answer. Okay, so first thing you can see here, X-ray crystallography in a 12th, or we can say in a 11th, 12th syllabus or NEET syllabus. X-ray crystallography mostly connect with the DNA. Okay, so Rosalind Franklin was a scientist. She was one of lady scientists, and she used
X-ray crystallography to detect, or we can say to photograph the DNA at that time. Okay, so X-ray crystallography is associated with DNA. X-ray technique is not answer actually. X-ray technique not use actually, or X-ray technique we can't associate any type of like DNA, RNA, like that thing. Next is intermittent light. Okay, so intermittent light means for the some duration, like we emit light and then stop the light, again emit light and then stop the light. That thing is known as the intermittent light. ठीक है, रुक रुक के light को वहां पर spread करना, that is intermittent light. Okay, so that also not an answer. Radioactive isotope technique is the correct answer. Okay, so radioactive isotope, which radioactive isotope they use, or we can say scientists use. Okay, so two scientists majorly focus in this area. One is the Kelvin. I think you know about the Kelvin, Melvin Kelvin. And after the Kelvin, there was another scientist, Arnon. Okay, so Arnon also same technique follow, which follow by the Kelvin. Okay, and they use a radioactive isotope. Okay, and in radioactive isotope they use a C14. Okay, and this C14 add in one of algae. Okay, to describe the pathway. Okay, मतलब केल्विन साइकिल का जो pathway है ना, उसको describe करने के लिए why they use radioactive isotope, because when they use radioactive isotope it emit some radiations, and उस radiation के पीछे पीछे ये गए. That means radiation shows the pathway. Okay, because we cannot trap, or we cannot focus on the simple carbon. Okay, but it emit the radiation. That's why we follow that carbon. Okay, so that is the simple thing. Okay, it just like कि जैसे किसी के पास light है, if one person have a battery and one person not have any type of battery. Okay, battery light. Okay, and that battery like containing person, or जिसके पास battery है, light है, that person easily हमें क्या होगा, in the dark time हमें easily जो है detectable रहेगा, like that. तो radioactive isotope इस तरीके से यूज किया जाता है. ठीक है, so after that we can discuss some of point of Kelvin cycle also. So Kelvin cycle you already know. It developed, or we can say it discovered by the Melvin Kelvin. Okay, and it known as the C3 cycle. Why it known as the C3 cycle? Because first stable product, ठीक है, was containing 3 carbon. ठीक है, तो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बना था इन द केल्विन साइकिल और C3 cycle is the 3 carbon compound. Okay, and that 3 carbon compound known as the PGA. ठीक है, so if you know the long form of PGA, you can answer me in the chat box. If not, then I will clear the thing. Okay, and here you can see this CO2. So CO2 come from the atmosphere and it catch by RUBP. Okay, RUBP one of component, and Rubisco is the enzyme. Okay, which important for the joining of CO2 and RUBP. So RUBP here is the CO2 acceptor. So I am right here, CO2 acceptor. Okay, Rubisco is the enzyme. Okay, which help for the CO2 accept. Okay, and then it develop a first stable product. Here again some of intermediate product. Okay, उसका हमें कोई काम नहीं है अभी, so हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं उसके ऊपर. We just focus on the 3-PGA. 3-PGA is the first product which made by the 3 carbon. Okay, and that's why it also known as the C3 cycle. इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, C3 cycle कहते हैं. There have a 3 step in this pathway. First is the carbon fixation. So we discuss about the carbon fixation. Next is the reduction process.
ओके, देन व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, यू ऑलरेडी नो, जहां पर हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन से निकल जाएगा, दैट इज द रिडक्शन. ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज द रीजनरेशन प्रोसेस. ठीक है. So regeneration process, in regeneration process again it develop 5 RUBP. ठीक है, सॉरी 3 RUBP. यहाँ पे फिर से ये क्या करेगा, 3 RUBP को डेवलप करेगा और एक्सेप्ट न्यू मॉलिक्यूल ऑफ CO2. ठीक है. अब हम इसका अगर एनर्जी चार्ट और वी कैन से बैलेंस शीट अगर इसका निकाले, सो फॉर दी वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर दी वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल वी नीड 6 CO2. ठीक है, ये इन होगा, वी नीड 6 CO2. ओके, एंड इट कन्वर्ट इनटू दी वन ग्लूकोज. ओके, and when we need a 6 CO2 at that time we need 18 ATP for the reaction. ठीक है, हमें कितने ATP की जरूरत है, 18 ATP and 12 NADPH. ओके, and 12 NADPH. So ATP, NADPH are the energy currency. You already know. Okay. So this 18 ATP converted into ADP. Okay, 18 ADP. You can see in this reaction also. This 12 NADPH converted into 12 NADP. Okay. So if we discuss about the for one CO2, मतलब एक CO2 के लिए कितना लगेगा, ठीक है, यहां पर देखना 6 CO2 ऐड हो रहा है. वी डिस्कस हियर फॉर दी वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए, बिकॉज यू कैन सी आफ्टर द रिडक्शन हियर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल डेवलप. ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल डेवलप हो गया एंड इट गो टुवर्ड द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस. ठीक है, ये चला जाएगा ग्लाइकोलिसिस के अंदर. ठीक है, तो दिस इज नॉट अवर पार्ट टुडे. ठीक है, ये रेस्पिरेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज मीन बाय ग्लाइकोलिसिस. सो हियर फॉर द वन ग्लूकोज वी नीड 18 ATP, 12 NADPH, ओके, एंड 6 CO2. बट फॉर द कंजम्पशन ऑफ वन CO2, मतलब एक CO2 का कंजम्पशन अगर हमें करना है तो हमें कितने ATP की जरूरत लगेगी, डिवाइडेड बाय 6 कर देने का, यहाँ डिवाइडेड बाय 6. सो दैट्स व्हाई 3 ATP, ओके, here to NADPH. So remember this thing. This type of tricky question always asked in the examination. ठीक है? Is it clear? If clear, please give me thumbs up. If not clear, then message me. Sir, this step not understood by हमें समझ में नहीं आया, like that. ठीक है? और please give me thumbs up. Okay, so we will discuss the next question. ठीक है? People who join from the YouTube live, they can answer, they can chat in the YouTube live also. Okay, so this is the somehow like short method to understand the cycle. Okay, sure. Okay, I think it clear to all. Okay, going toward the next question. Next question is on your screen. During the monsoon, the rice crop of eastern state of India show lesser yield due to limiting factor. So I think you already know about the limiting factor. So options are CO2, light, temperature, water. So these are the options. I'm launching poll for it. Please answer. Second, left. You have 50 seconds only to answer this question. Okay, you have a 10 second only to answer this question. Okay, so I am in this poll.
Here most of people answer option C, but option C not the answer actually. This question asked in 1991 also. Okay. So what is meant by limiting factor? First thing, what is meant by limiting factor? So limiting factor are the nearest to minimal कंपोनेंट फ्रॉम द रिएक्शन. ठीक है, मतलब कोई एक रिएक्शन चल रहा है और उसमें भी सम ऑफ कंपोनेंट इज अ वेरी लिस्ट, मतलब बहुत छोटा कंपोनेंट है. एंड दैट छोटा कंपोनेंट, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट विल अफेक्ट द होल रिएक्शन और होल एक्टिविटी. दैट थिंग इज नोन एज द लिमिटिंग फैक्टर. उसको ही हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर. ओके मतलब उसका अगर क्वांटिटी कम हो गया तो हमारा एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर नहीं होगा या नहीं चलेगा. लाइकवाइज जैसे फॉर एग्जांपल वेन एवर यू मेकिंग अ टी इन अ हाउस और होम वॉट एवर, ठीक है, तो हमें टी बनाने के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए? वी नीड अ मिल्क, ओके, वी नीड अ टी पाउडर, वी नीड अ शुगर. ओके, so if मिल्क इज नॉट अवेलेबल देन ओके नो इशू, टी बन जाएगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाँ, एंड वी आल्सो नीड दी वाटर. ठीक है, इफ शुगर नॉट अवेलेबल, टी बन जाएगा, बिकॉज डायबिटिक पेशेंट जो है विदाउट शुगर वाला टी पीते हैं तो टी बन जाएगा. बट हियर वाटर एंड टी पाउडर आर द लिमिटिंग फैक्टर. वाटर और टी पाउडर क्या हो गया? लिमिटिंग फैक्टर हो गया. और मोस्टली टी पाउडर इज द लिमिटिंग फैक्टर, बिकॉज वाटर भी नहीं रहेगा, ओनली मिल्क इज हियर, देन टी बन जाएगा. ठीक है, तो विदाउट टी पाउडर वी कैन नॉट मेक अ टी. ठीक है, एंड वो भी अगर कम रहता है देन इट अफेक्ट दी एक्टिविटी, मतलब ये वो टी बनने का जो टोटल एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करेगा. सो सेम थिंग यू वांट टू अप्लाई ऑन दिस प्रोसेस. इसके ऊपर इसको अप्लाई करके देखो फोटोसिंथेसिस के ऊपर. सो फॉर द फोटोसिंथेसिस व्हाट वी नीड, क्या क्या जरूरत है हमें फोटोसिंथेसिस के लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ. फोटोसिंथेसिस क्या क्या जरूरत है हमें? वी नीड CO2. ओके, वी नीड सॉरी O2 नहीं चाहिए. ठीक है, ठीक है, चलो मैं राइट करते जाता हूँ. CO2 चाहिए, O2 नहीं चाहिए हम. ओके, वी नीड लाइक वाटर. ठीक है, देन वी नीड लाइट. लाइट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर लाइट नहीं रहा तो एक्टिविटी नहीं होगा. सो दिस थ्री फैक्टर आर द मेजरली इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी. अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द मानसून द राइस क्रॉप ऑफ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया शो लेजर yield. Here they talk about the season, and season is the monsoon. And monsoon के season में क्या issue रहता है? They not talk about the winter, because you like select option C, that's why. ठीक है, because winter में temperature का issue हो सकता है, but temperature is not major issue. ठीक है, अगेन वो सेकेंडरी इश्यूज में आएगा. ठीक है, बट ड्यूरिंग द मानसून विच थिंग इज द लिमिट और विच थिंग इज द लिमिटिंग फैक्टर? सो ड्यूरिंग द मानसून लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर. ओके, सो रिमेंबर थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है हमारा एक्टिव रखो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय. एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अदर ऑप्शंस आर द रॉन्ग हियर. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इजी मार्क फॉर मार्क. ठीक है, सो मानसून के समय में लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है, आई थिंक इट क्लियर इन योर माइंड. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ सिंपल क्वेश्चन. 30 सेकंड देता हूं मैं इसको सॉल्व करने के लिए. C4 साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय हैच एंड स्लैक, केल्विन, हिल एंड अर्नॉन. ठीक है, सो आई एम लॉन्चिंग पोल फॉर यू गाइस, प्लीज आंसर फर्स्ट. चलो जल्दी जल्दी. तो हम इसको एंड करेंगे. एंड दिस इज रिजल्ट. हियर मैक्सिमम पीपल चूज एन ऑप्शन ए, एंड ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा. सो हैचसैक
pathway is known as the C4 cycle. ठीक है? Why it known as the C4 cycle? Because first stable product is the 4 carbon compound. That's why C4 cycle. ठीक है? Haslak pathway. Next is the Kelvin. Kelvin, we already discussed about the Kelvin. C3 cycle बोलते हैं. Next is the Hill. There was one reaction, famous reaction that known as the Hill reaction. ठीक है? So what is the contribution of Hill in the डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? ठीक है? सो हिल क्या कहता है कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा, ठीक है, उसको जो हाइड्रोजन मिलने वाला है, ठीक है, सो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो रहेगा, सो व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द रिएक्शन? जैसे हम अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का बात करेंगे, सो यू कैन सी देयर NADPH. ठीक है? NADPH. तो दिस H कम फ्रॉम दी वाटर. ठीक है? ये H कहां से आया? वाटर से आया. ओके? एंड दैट थिंग डिस्क्राइब बाय द हिल, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द हिल रिएक्शन. उसी रिएक्शन को हम कहते हैं हिल रिएक्शन, बिकॉज हियर NADPH इज द फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा. ठीक है? वहां पर हमें NADPH देखने को मिलता है, एंड सॉरी NADP देखने को मिलेगा, एंड NADPH रिलीज फॉर द डार्क रिएक्शन, एंड NADPH चला जाएगा देन डार्क रिएक्शन के अंदर. ओके? एंड दैट थिंग डिस्कवर्ड बाय द हिल. नेक्स्ट वन इज द अर्नॉन. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अर्नॉन. अर्नॉन इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, मींस साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है? इसको डिस्कवर किया है अर्नॉन. ठीक है? फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है? सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. NADPH positive is reduced to NADPH. So we already discussed in the last question about same concept. उसको ही कंटिन्यू करते जाएंगे. In cyclic photophosphorylation, PS2 Kelvin cycle non-cyclic photophosphorylation. And I am launching poll for you guys. Please answer fast. चलो जल्दी जल्दी आंसर. You have 1 minute to solve this question. Please answer. So you have 30 seconds to solve this question. Please answer fast. Okay, so I'm in this poll. यहाँ पर किसी का आंसर नहीं मिला मुझे. ओके, सो NADPH पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADPH इन. ठीक है? सो NADPH कौन से एक्टिविटी में बनता है? दैट इज द सिंपल क्वेश्चन. Option 1 is the cyclic photophosphorylation. So in cyclic photophosphorylation, NADP is not produced, only ATP produced. यहाँ पर ATP बनता है. PS2 is the photo system. So you already know, I think, about the PS2 and PS1. Okay, so इसको एक simple revise कर लेते हैं. What is meant by PS1? What is meant by PS2? So here you can see on screen two diagrams. One diagram is the non-cyclic photophosphorylation. ठीक है? It's known as the non-cyclic photo. ठीक है? So this is the non-cyclic photophosphorylation, and this one is the cyclic. ठीक है? This
non-cyclic photophosphorylation also known as the Z, because here you can see उसका जो shape है, that is the Z shape, that's why. And in the non-cyclic photophosphorylation, two photosystems are used. One is the photosystem 1, next one is the photosystem 2. Okay, or we can say activity start from the photosystem 2, okay, and end with the photosystem 1. So first it use the photosystem 2. In photosystem 2, with the help of light reaction, electron excited and excited electron go toward the different electron acceptors. ओके यहाँ से अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये चला जाएगा. In the photosystem 2, you can see the water splitting complex. Okay, here H2O break. Okay, and oxygen release from the reaction. Okay, and this hydrogen give the electron for the excitement of the electron, and this hydrogen again come in the activity or reaction. Okay, यहाँ पर हाइड्रोजन फिर से रिएक्शन में आ गया with the help of cytochrome B6 complex. And again this electron go toward the photosystem 1. Again it excited. ठीक है, here P700 and P680 used in the photosystem 2, and P700 reaction center used in the photosystem 1. And इस तरीके से you can see last product is the NADPH. यहाँ पर क्या बनता है, NADPH बनेगा with the help of NADP and hydrogen. Hydrogen come from the water. ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन हमें देखने को मिले. So this is about the Z team, or we can say non-cyclic photophosphorylation. Likewise, you can see here the cyclic photophosphorylation. In the cyclic photophosphorylation, only one photosystem is used, that is the PS1. मतलब यहाँ पर PS1 ही use होता है, and it run on the 700, मतलब P700 जो रिएक्शन सेंटर है उसके बेस पर ये रन होगा. Why it called cyclic? Because you can see इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साइक्लिक मैनर में रहेंगे. इन दिस केस इलेक्ट्रॉन जो है इट नॉट इन अ साइक्लिक मैनर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा. ठीक है, रिएक्शन से निकल जाएगा. दैट्स व्हाई it known as the cyclic, it known as the non cyclic. ठीक है, so these are ferrodoxin, cytochrome, cytochrome A, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट. ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. So this is the major difference between the cyclic and non-cyclic phosphorylation. ठीक है, so only ATP developed by the cyclic, NADPH and ATP both molecules are developed by the non-cyclic. You can see here NADPH developed, okay, and here ATP developed, okay, by the non-cyclic photophosphorylation. And that's why here answer is the non-cyclic photophosphorylation, not a Calvin cycle. Calvin cycle is the part of dark reaction. ठीक है, okay. Non-cyclic photophosphorylation is the part of light reaction. PS2 is the part of light reaction, and cyclic photophosphorylation also part of the light reaction. Okay, so that's why non-cyclic photophosphorylation is the correct option here. Okay, coming to the next. Okay. So here carbon dioxide join the photosynthetic pathway in, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री कहां पर होती है during the photosynthesis process. Option A PS1, option B PS2, option C light reaction, option D dark reaction. I'm launching poll again. Please answer fast. Do you have a 30-second to solve this question?
Okay. So I am in this port. This is your result. Maximum people choose an option D. Obviously, option D is the correct option. ठीक है. So यहाँ पर एक हम डायग्राम को देख लेते हैं सबसे पहले. I we need CO2. हमें CO2 की जरूरत क्यों रहती है? First of all, in the light reaction, H2O was used, ठीक है, and O2 release. वहां पर O2 release होता है, H2O होता है, NADPH and ATP come from the light reaction. ठीक है, ये आएगा हमारे light reaction से. NADPH, NADPH also come from the light reaction. Okay, and CO2 is used to develop glucose. Okay, and this is the part of dark reaction. ठीक है, डार्क रिएक्शन मीन्स लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब इसको लाइट की जरूरत नहीं है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट नोन एज द डार्क रिएक्शन. इट नॉट हैपन इन द नाइट टाइम. ठीक है, नहीं तो बहुत से दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है डार्क रिएक्शन हैपनिंग इन द नाइट टाइम. ठीक है, ऐसा नहीं. ठीक है, इट विल और इट हैपन और हैपनिंग इन द डे टाइम ऑल्सो. ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डार्क रिएक्शन. That's why option D is the dark reaction, not a light reaction, not a PS1, PS2. PS1, PS2 are the part of light reaction. ठीक है, next question is photorespiration is favored by. ठीक है, photorespiration कब होगा? ठीक है, it asked in 1996. Option A, when high O2 and low CO2 available. When option B, low light and high O2 available. Option C, when low temperature and high O2 available. Option D, low O2 and high CO2 available. Launching poll again, guys. Please answer fast. You have 1 minute to solve this question. Chalo. You have a 30 seconds. 30 seconds are the left only. Okay. Okay, so I'm in this poll. And this is your result here. Maximum people choose an option A. Obviously, option A is the correct option. चलो देखते हैं इसका आंसर. So photorespiration is favored by. Then what is meant by photorespiration first? Photo means light. Okay. And respiration means intake of O2. Okay, simple. Okay. So that thing is known as the photorespiration. But हमें पता है कि for the photosynthesis activity we want to require or plant want to require CO2. ठीक है, फिर O2 का क्या झंझट है? ठीक है. So there have one theory. That theory is known as the Warburg effect. ठीक है, एक theory है जिसका नाम है Warburg effect. Warburg effect. Okay. Then what is meant by Warburg effect? Okay. So during the photosynthesis process, what happens? Okay, light is emitted. Okay, and with the help of light and with the help of CO2, more yield is produced. Okay, मतलब ज्यादा से ज्यादा yield produce होता है और more glucose will produce in the plant. So, for example, if light increases, okay, when light increases, photosynthetic yield, okay, is increases. So I am right here, yield is increases. Okay, so if yield is increases, yield in the sense glucose is increases in the plant. Okay, if yield is increases, it also increase O2 molecule in the environment. ओके, बिकॉज लाइट ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी चलेगा O2 भी उतना इंक्रीज होगा. देन हियर
लिमिट में कौन आ जाएगा, CO2, CO2 गेट डाउन, ये कम होते चला जाएगा। एंड व्हेन O2 इज इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फियर, ठीक है, यहाँ पर RUBP is a one of molecule you already know. RUBP is important to accept CO2, but here RUBP changed their property, and due to we can say maximum quantity of O2, availability of O2 in the atmosphere, they bind, or we can say RUBP accept O2, or O2 bind with the RUBP, and that's why it known as the photorespiration. Photo means light. In the presence of light, they accept O2, means RUBP accept O2, and that's why it's known as the photorespiration. But photorespiration is the dangerous process, or is the some of toxic process to the plant. ठीक है, because due to फोटोरेस्पिरेशन क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स वाज इंक्रीज इन द प्लांट, एंड दैट्स व्हाई प्लांट को डैमेज हो सकता है. फॉर ओवरकम दिस प्रॉब्लम, देयर हैव वन प्रोसेस you can see on your screen. Okay, so this is the complete photorespiration process where O2 combine with RUBP. यहाँ पर O2 RUBP के साथ combine हो रहा है. Okay, and it develop phosphoglycolate. Phosphoglycolate is the first stable product here, and it have a carbon product, and that's why it also known as the C2 cycle. इसको हम C2 cycle भी कहते हैं. And this go toward the one of chain of reaction, and last में हमें product मिलता है 3 PGA, and this 3 PGA go toward the next cycle जो हमारा केल्विन साइकिल है उसमें. ठीक है, so this is known as the photorespiration. So when photorespiration happen, when high O2 and low CO2 is present in the atmosphere or environment. Okay, ठीक है, simple. Next, the carbon dioxide acceptor in Kelvin cycle is, carbon dioxide acceptor कौन है Kelvin cycle में? It as in 1993, 95, 96, 99, मतलब कंटिन्यूस सीरीज है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द फॉस्फोइनोल पायरुवेट टाइप. ऑप्शन बी इज द राइबोलोज 1,5 डिसफॉस्फेट RUBP, sorry, diphosphate. Next is the phosphoglyceric acid PGA, and next one the ribose monophosphate. So I am launching poll for you. Please answer fast. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो. चलो चलो, only 30 seconds are left, guys. Please answer fast. Okay, so I am in this poll, and this is your result here. Maximum people choose an option B. Obviously, option B is the correct answer. बहुत ही simple question है. The carbon dioxide acceptor in a Kelvin cycle, उसमें रहेगा ribulose 1,5 sorry, diphosphate. Diphosphate also known as the bisphosphate. ठीक है, that's why it's known as the RUBP. BP means bisphosphate. ठीक है, बिसफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज द एक्सेप्टर फॉर C4 साइकिल. C4 साइकिल में कौन यूज होता है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट. एंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज द प्रोडक्ट. ठीक है, सॉरी, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज द राइबुलोज मोनोफॉस्फेट. इसका नाम नहीं है कहीं भी इन अवर बुक. ठीक है, सो रिमेम्बर दिस थिंग. चलो, नेक्स्ट, विच वन इज द C4 प्लांट? कौन सा नीचे में से C4 प्लांट है? फर्स्ट ऑप्शन इज द पपया,
Option B is the pea plant. Option C is the potato plant. Option D is the maize or corn plant. I'm launching poll again for you. Please answer fast. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए फॉर द 4 मार्क. वेरी सिंपल क्वेश्चन. प्लीज आंसर फास्ट. Okay, you have a 30 seconds to solve this question. Please answer fast. Okay, so I'm in this poll. This is your result here. Maximum people chosen option D. Obviously, option D is the correct answer. Then, what is question? Which one is the C4 plant? नीचे दिए में से C4 plant कौन सा है? ठीक है. So correct option is the maize. So C4 system develop in plant which like जो रहते हैं like here is the high temperature, जहां पर ज्यादा है वहां पर वो देखने को हमें मिलते हैं. ठीक है. So in that plant you can see some type of different structure. That structure is known as the Kranz anatomy. Okay. In a Kranz anatomy there have two type of cell, mesophyll cell, bundle slit cell. ठीक है. In a mesophyll cell you can see the phosphoenol pyruvate. Okay. So carbon acceptor. Okay. And it developed the C4 acid. ठीक है. It transported to the bundle sheet cell, and then next procedure happen in and it enter into the C3 cycle. ठीक है. So it avoid photo respiration. ये क्या करेगा? फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करेगा. ठीक है. फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करेगा. ठीक है. चलो, कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, in photosynthesis, energy from a light reaction to the dark reaction is transferred in the form of. ठीक है. It was asked in 2002. मतलब कौन से फॉर्म में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होता है? एडीपी, एटीपी, आरयूबीपी, क्लोरोफिल. एंड दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन आई एम लॉन्चिंग पोल 30 सेकंड के लिए. ठीक है. प्लीज आंसर इन द 30 सेकंड. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. So I am in this poll. यहाँ पे देखा है आंसर इसका सीधा सीधा एटीपी. ठीक है. सो एटीपी के फॉर्म में इन द फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू द डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है. मतलब एनएडीपीएच इट आल्सो यूज. ठीक है. NADPH पॉजिटिव, बट अगेन एनर्जी करेंसी इज द एटीपी. फाइनल NADPH भी कहां पर जाएगा? एटीपी में ही जाएगा. दैट्स व्हाई एटीपी इज द करेक्ट आंसर. अदर आंसर आर द रॉन्ग. ठीक है. आरयूबीपी, क्लोरोफिल, एडीपी तो नहीं हो सकता. ठीक है. लाइकवाइज. चलो, यस ऋषु. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस. During photorespiration, the oxygen-consuming reaction occur in. Rishu, share your question. Okay, during photorespiration, the oxygen-consuming reaction occur in. Oxygen-consuming reaction कहाँ पर होता है? During the photorespiration process, first option is the stroma of chloroplast and peroxisome. Option B, grana of chloroplast and peroxisome.
option C, stroma of chloroplast, option D, stroma of chloroplast and mitochondria. So I am launching poll for it. Please answer fast. ठीक है. चलो, you have a 1.30 second. One means 1 minute 30 second to solve this question. चलो जल्दी जल्दी solve करो. Okay. So I'm in this poll. चलो इसको डिस्कस करते हैं हम. ठीक है. So here, during the photorespiration, the oxygen-consuming reaction occur in. इसका direct answer है, that is the stroma of chloroplast and peroxisome. Okay. So in the chloroplast, stroma of chloroplast कौन रहेगा? RUBP. ठीक है. वो उसको रिसीव करेगा O2 को. ठीक है. इन द पेरोक्सीजोम के केस में ग्लाइकोलेट. ठीक है. ग्लाइकोलेट रिसीव मोर ऑक्सीजन. ठीक है. एंड दिस ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन को रिसीव करके इसका कन्वर्शन कर देगा ग्लायोक्सिलेट में. ठीक है. ग्लायोक्सिलेट. ओके. एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ठीक है. नॉट अ ग्रान ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, नॉट अ स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नॉट अ स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. So again, next question on your screen is series of reaction which can convert fatty acid to sugar in a plant but not in an animal is. And options are Krebs cycle, glycosylate cycle, ornithine cycle, and glycolysis. You have a 1.30 second, or we can say 1 minute and 30 seconds to solve this question. I am launching the poll. Please answer fast. Okay. चलो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. ठीक है.
ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर है ना, मोस्ट ऑफ पीपल लाइक से कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑर्निथिन साइकिल। एक्चुअली ऑर्निथिन साइकिल जो है वो अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में करता है, ठीक है। अमोनिया का कन्वर्शन करेगा यूरिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस आंसर तो नहीं है, हमें पता है ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। क्रेब साइकिल भी नहीं है, ठीक है। क्रेब साइकिल जो है हमें एनर्जी देने का काम करता है फर्दर प्रोसेस में, ठीक है। सो यहाँ पर है ग्लाइकोलेट साइकिल, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो दिस इज द ग्लाइकोलेट साइकिल, ठीक है। इन दिस ग्लाइकोलेट साइकिल जैसे फैटी एसिड मॉलिक्यूल अगर है कोई, ठीक है, इट कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए, ठीक है, उसको एसिटिल कोए में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्लांट, ओके, एंड इट एंटर इनटू द क्रेब साइकिल, ठीक है। उसके बाद वो चला जाएगा क्रेब साइकिल, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द ग्लाइकोलेट साइकिल, ठीक है। सो इट हैपन इन प्लांट ओनली, ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, coming toward the next question is very simple question. Oxygen is not produced during photosynthesis by, ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस नहीं करता है नीचे दिए गए में से। फर्स्ट ऑप्शन इज द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज द नॉस्टैक, ऑप्शन सी इज द साइकस, एंड ऑप्शन डी इज द चार। प्लीज आंसर फास्ट, 1 मिनट का समय है, आई एम लॉन्चिंग पोल। चलो जल्दी जल्दी आंसर। कल है, चलो 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 चलो, हम एंड कर देते हैं पोल, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है और एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, ठीक है। So here, most of people chosen option A. Obviously, option A is the correct option. That is the green sulfur bacteria. यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। So जनरली जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो इस तरीके से हम लिखते हैं, 6 CO2, ओके, प्लस 12 H2O, ओके, गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O plus 6O2. Okay, so it happened where chlorophyll is present. So it present in nostac, मतलब क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, ठीक है। नोस्टैक साइकस चारा, इनमें ये रिएक्शन होगा, ठीक है। सो दिस रिएक्शन is known as the photosynthetic reaction, or we can say light reaction, where O2 is released, जहां से O2 रिलीज होता है। But in a green sulfur bacteria, reaction happen like this: 6 CO2 plus 12H2S, ठीक है। So here you can see they consume S, sulfur, okay, in the presence of light हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 6C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S, नॉट O, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता, ओके, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। चलो, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। क्वेश्चन इज द कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज, यू हैव 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर कीजिए, कोर कोर मेटल क्या है क्लोरोफिल का। Option A is the Ni, means nickel. Option B is the Cu. Option C is the Fe, means aluminum. Option D is the Mg. Please answer fast. ठीक है।
चलो मैं लॉन्च कर देता हूँ नेट। So I'm in this poll, and you can see this is the molecule, ठीक है। यहाँ पर हमें सेंटर एटम दिख रहा है Mg, ठीक है। सो Mg इज द करेक्ट आंसर। सो कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज द Mg, ठीक है। Fe रहेगा हीमोग्लोबिन में, ठीक है। Hb में Fe रहता है, ठीक। एंड यहाँ पर हम हमारा क्लास एंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड हैव अ नाइस संडे, ठीक है। थैंक यू, चलो गुड बाय।